Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube. This is continuation of my series in which I'm helping you preparing IELTS Cue Card, especially in IELTS Speaking Part 2. अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम जिस क्यू कार्ड को देखेंगे, मैं थोड़ा उर्दू में ज़्यादा आपके साथ इसलिए इंटरेक्ट भी करता हूँ आजकल, ताकि वो लोग जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं या चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो उनको अंदाज़ा हो कि चीज़ों को समझना कैसे है, और फिर फ्लुएंसी में हम जब पार्ट 2 को प्रिपेयर करेंगे और जब बोलेंगे तो इंशाल्लाह वो थ्रू आउट इंग्लिश में होगा एज पर योर प्रेफरेंस. अगर आप चाहते हैं तो इससे आप थोड़ा नेक्स्ट स्टेप करके डायरेक्टली क्यू कार्ड पे भी जा सकते हैं. क्यू कार्ड जो आज का है, इट्स डिस्क्राइब अ पर्सन यू नो हु इज फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर. अच्छा, डिफरेंट कल्चर में हमारे जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू फ्रॉम पाकिस्तान और फ्रॉम इंडिया मे बी बांग्लादेश और समवेयर, तो आपके कल्चर के आपके अंदर कंट्रीज में भी बहुत सारे कल्चरल डिफरेंसेस हैं. फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान की एग्जांपल देता हूँ. यहाँ पे पश्तून्स हैं, यहाँ पे सराइकी हैं, यहाँ पे सिंधीज हैं, यहाँ पे बलोचिस हैं, तो बहुत सारे कल्चर्स हैं. अगर तो आपके पास कोई फॉरेन एक्सपोजर नहीं है तो बेहतर है कि आप अपने ही कंट्री का डिफरेंट कल्चर प्रेजेंट कर दें. अदरवाइज डाटा आपको तब मिलेगा जब आप किसी दूसरी कंट्री के या किसी दूसरे कल्चर के जो किसी दूसरी कंट्री में हो उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आपके लिए बेटर होगा. डिस्क्राइब अ पर्सन यू नो हु इज फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर. इसमें कोई पास्ट चीज नहीं है, सो इट्स अ प्रेजेंट थिंग. नंबर 1. नंबर 2, हु ही और शी इज. ऑफ कोर्स यू विल टॉक अबाउट द पर्सन. वेयर ही और शी इज फ्रॉम, इट्स योर चॉइस, लड़का है या लड़की है. वेयर इज ही और शी फ्रॉम. आई टोल्ड यू द अदर डे एज वेल, दैट वाज द डेक्सेस. नाउ दिस टाइम यू रिक्वायर डेक्सेस ऑफ प्लेस, कि कौन सी जगह से वो है. हाउ यू न्यू him or her. Now it's the past time. Present में चलने के साथ आपको past को switch करना होगा because it was talking about the past. And explain how you feel about him or her. Like what is your relationship with him or her? Is he a friend, or you feel excited with the person, or you feel gloomy about something? Such things you have to highlight. ठीक है, let's get started with that. Okay, today I am going to talk about a person, rather I will call it a personality, I know, from a different culture. He is not from a different culture, but also he is from a different country. His name is Khalid. He is one of my old students, and he is my Turkish student and who had been preparing his IELTS with me in the past, and he came all the way from Turkey to prepare his IELTS. He is the one who represented Turkey in a very positive manner. He was the one with the best manners I have ever met anyone, as well as he was a super positive person and super energetic person. I found him quite polite while talking to others, and I found him also very interesting when he speaks English in his own Turkish accent. That was out of the world. There were a few sounds he was pronouncing which were kind of not common in Pakistan, and he was making it just like no one in Pakistan. So that was the beauty of talking to him. I mentioned that he is from Turkey, and I met him back in 2020. It's been almost 2 years that we met, and he is still in my contact. And I remember that when he left my course and when he left my academy, he presented me a particular kind of coffee which is super common there, and he gave me a present, and he said that to a happy couple we present this, and that's still with me, which is a good memory of him. About him, I feel that he was a practicing Muslim. He was the one who knew that how to behave in the society. He was best of the manners, as well as he was a person who I would like to say that who was never into any kind of confrontation with anyone. He used to politely reply, or he used to ignore if someone tries to even disturb or engage him into some kind of below the belt activities. So yeah, that's pretty much about the person I remember. Okay. तो इस ऑडियो के अंदर या इस तरह के क्यू कार्ड के अंदर आप किसी भी तरह के पर्सन के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन आपने ये चीज फोकस करनी है कि आपके 1 मिनट प्रिपरेशन टाइम के अंदर आपके पास कुछ वोकैबुलरी आइटम्स हों. यानी कि मेरी जो वोकैबुलरी थी ये बहुत बेसिक थी, विच वॉज नॉट अ वेरी गुड क्यू कार्ड. अगर मैंने इसमें कुछ वर्ड्स ऐड किए होते, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था ही इज अ कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी, ही इज आई कैचिंग, ही इज नोटिसेबल इन क्राउड, ही इज सो मैस्मराइजिंग व्हेन ही टॉक्स अबाउट हिज टाउन, इस तरह की चीज़ें. तो ये चीज़ें आपने अगर ऐड की होती या मैंने अगर ऐड की होती तो ये एक बैंड 8 वाला आंसर होता. जो मेरा भी आंसर था इट वाज बैंड 6 और 6.5. बट आई थिंक यू गॉट द क्लू. Thank you very much. And if you want me to prepare any cue card for you, in the comment section you can write the cue card and I'll surely make a video on that. Or you can reach at our contact, that is 0331 873 1234. Thank you very much.